बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, इंस्टाग्राम की डिफरेंट हाइलाइट्स कैसे हैं, पोस्टिंग कैसे करनी है, कैप्शन क्या होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे इंस्टाग्राम ऐड के बारे में। जिस तरह हमने फेसबुक ऐड के बारे में पढ़ा, यूट्यूब ऐड के बारे में पढ़ा, इस सोशल प्लेटफॉर्म का भी अपना एक ऐड प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उस प्लेटफॉर्म की क्या यूजेबिलिटी है, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को यूज़ क्यों करना चाहिए और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे रिजल्ट्स उसमें से डिराइव करते हैं, और एक बिज़नेस के लिए क्या वायबिलिटी है, क्या जस्टिफिकेशन है कि वो इंस्टाग्राम ऐड यूज़ करे। सो लेट्स स्टार्ट। As we already know, Instagram are very powerful, and if you are familiar with running Facebook ads, and that we have already learned about that, and then the process will be very easy. And if you are new to the advertisement game, then there are some key things that you should know before you get started with Instagram ads. And why should you be using Instagram ad? इंस्टाग्राम ऐड इस्तेमाल क्यों करने चाहिए या इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट क्यों करनी चाहिए? इसलिए a study of Instagram showed that 60% of the users say they learn about the product and any service from the from the Instagram. So 75% of those have claimed and said that they took action after took action like visiting a site, seeing a post, installation and all those kind of actions. So 75% लोगों ने ये कहा हुआ है कि आउट ऑफ 60% यूजर्स है कि हम जब भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में हम कोई एक स्पेसिफिक एक्शन डिराइव करते हैं. So no matter what your product is, getting it exposed in front of the right eyes at the right platform like Instagram can be a big payoff for you, and it can give you a lot of return on investment and return on ad spend as well. जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फेसबुक जैसे फेसबुक ऐड जो मैनेजर है, फेसबुक ऐड मैनेजर में उसमें किस तरह से हम एडवर्टीजमेंट करते हैं और उस सारे चीज़ को इंस्टाग्राम ऐप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो ओवर हाउ टू मैनेज एड्स विद इन योर फेसबुक ऐड मैनेजर. हम जाएंगे फेसबुक बिजनेस पेज पे एंड मैनेज ऐड. वहाँ से स्टार्ट बाय सिलेक्टिंग मैनेज ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द अपर राइट कॉर्नर, और फिर ग्रीन जो कलर का क्रिएट ऐड है वहाँ पे हम प्लस जो क्रिएट ऐड का साइन है उस पर हम क्लिक करेंगे. फिर हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स. उसमें डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में आपका ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, इंगेजमेंट है, ट्रैफिक, कन्वर्जन, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़ एंड लीड जनरेशन. सो ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली आपके ब्रांड के बारे में नो हाउ, नए ऑडियंस को आपके ब्रांड के बारे में बताना, या आप ब्रांड के बारे ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करना. So increasing awareness to new audience who are likely interested in your brand is a brand awareness. And reach, show your ads to the maximum number of the people. Engagement, encouraging your audience and encouraging more people to see and engage with your post. Traffic means driving people to visit your website. And conversion means encouraging people to take action on your website, like adding a payment method or signing up for an email or a sale or whatsoever you want your objective of the conversion is. So app install is direct people to where they can install your mobile app. And video views mean promoting your views. So lead generation basically allows you to generate new leads and gather contact information about the leads. Now after that we define our audience, and in audience we decide how to target them. And Facebook provides many different options for identifying our audience. Some of the main ones are location, demographics, interests, behaviors, custom audience and lookalike audience and automated targeting. ये हम फेसबुक के चैप्टर में, फेसबुक के लेक्चर में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं. इसको मैं इसकी डेफिनेशन को ज़रा स्किप करता हूँ क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है. सो नोइंग हु योर आइडियल ऑडियंस इज ऑन इंस्टाग्राम इज ह्यूज.
Then enlisting the help of Instagram marketing services can help you find it. So this is a pro tip for you. And after that you have to select the placement. First campaign, then audience, अब placement कि कहाँ ad हमें show करना है. You can select where your ad will appear on Instagram and Facebook. So it's always recommended from my side that you run the same ad on both platforms. Studies from Facebook marketing science and smartly data, you found that Facebook optimizes ad placement if you do this, and by choosing automatic placement your ad will be shown wherever they are predicted to perform the best. And after placement, choose your budget. Now next you must determine how much you want to spend on your ad. You can pick a daily budget or a live stream budget and can choose when to run ad. And the estimated daily reach scale will determine how many people your ads are expected to reach based on the parameter you set. And after the placement and budget, this is the time to actually create your ad, right? Time to get creative. You will need to first select the image and video you want for your ad. And in terms of image size, Facebook recommend 1200 to 628 pixel and a little overlay text. They also have a guide for more specifications. You can search the Google Facebook guide for the ads, and you can have a lot of information over there as well. Then move on to add elements like headlines, descriptions, CTAs, and before you confirm, be sure to preview your ad to make sure it looks like exactly how you are imagining and how you'd like. And next we will go over uh, how to create ads within the Instagram app. अब आते हैं advertising within the Instagram app पे. Now promoting ads on the Instagram app doesn't allow for as much customization as Facebook Ad Manager. And if you have a post that is generating a ton of engagement and a lot of engagement, you can promote it right on the app to reach even more people. And post not doing too well, if you need some extra help, Kickstarter can help you organically increase your reach on Instagram. So once you have the post you want to use, just click the promote button in the bottom right corner and you will be promoted to choose your advertising option. And keep in mind, you need an Instagram business profile to promote that. And after you set your goal for the promotion and run the ad, you can track results of in-app promotion in your Facebook ad manager as well. अच्छा जी, अब आते हैं types of ad पे. Ad की types, there are 5 different types of ad formats on Instagram, जिसमें फोटोज हैं, वीडियोस, कैरोसेल, स्लाइड शोज एंड स्टोरी एड्स. और ये सारे यूजर की फीड में और स्टोरीज में ये दिखाई दे रहे होते हैं. So keep in mind the CTA button you will choose should have a bigger impact and effect on your ad click-through rate. So be sure to pick accordingly and pick something that is relevant to your business and what ad is showing, and that will incentivize people to learn more. And you can expand on your call to action by providing detail in the caption that we've already read. अब अगर फोटो ऐड की मैं बात करूं तो फोटो एड्स, these are the simplest form of the ads on Instagram and they only require one square image. अब अगर वीडियो ऐड की बात करूं तो Instagram video ads have proven to generate greater engagement over the years, and including them in your ads can tell a quick and meaningful story. And video ads can be up to 60 seconds long and be uploaded in either square or landscape format. Now carousel ad. Carousel ad बेसिकली जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आप लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं तो एक ऐड चलना शुरू हो जाते हैं. सो वो एड्स carousel ad कहलाते हैं. So carousel ad can have to up to 10 images/videos that user view by swiping through. And
कलेक्शन जो एड्स होते हैं, यू कैन टेल एन इंटीग्रेटेड स्टोरी within a product or a live focus using both images and video. So collection ad भी बड़े अच्छे एड्स होते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा और इसके बारे में मजीद लर्न करेंगे। ये किस फिर अब आते हैं स्टोरीज एड पे। And story ads appear to user between the stories they are already viewing from people they follow. And since stories expire after 24 hours, they're ideal for an ad promoting limited time offers and sales. So the CTA is in the form of the swipe up feature that takes audience directly to your website. And some of the best practices that I follow most of the time, वो कुछ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, आप उनको गौर से सुनिएगा और फिर उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ दैट यू नो द इन्स एंड आउट ऑफ क्रिएटिंग एन एड, आपको पता चल गया कि एड क्रिएट कैसे करते हैं, एड पब्लिश कैसे करते हैं। And there are some tips you should keep in mind to see your ads succeed. And since you are driving more traffic to your page, you also want to ensure you optimize your optimize your Instagram profile for the best and lasting results. Know your target audience, make it look natural. Always जो आपका CTA हो, focus less on text and more on imagery, and use your best content to promote. And instead of trying to create a brand new content for your ad, look back to see what post generated the most organic engagements and repurpose these older posts to drive even more users there and see a bigger spark. And experiment with different techniques. Be sure to test or different ad formats to see what your audience respond best to. Some companies see better results in video, but perhaps your ideal customer would prefer a story told through a quick carousel ad. So check your analytics regularly so you can track what is working for you. So these are some of the best practice for the Instagram ad. ये बहुत ही आसान था, इसको आप प्रैक्टिस करें क्योंकि ये हम पहले भी फेसबुक वाले चैप्टर में, फेसबुक वाले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लर्न करें, इसको प्रैक्टिस करें और फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप जो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।